Let's discuss about OUT paper 2020 PYQ. Okay, from 133 question to 200th question. Let's start. Which is a part of pectoral girdle, that is glenoid cavity, due to discovery of which of the following in 1980s the evolution was termed as RNA's world. Okay, so that is RNA have enzymatic property. Iris is a part of dash, that is the part of sclerotic and choroid. Desert plants are generally what? Viviparous, herbaceous, succulent, and heterophyllous. So the right answer is succulent. A condition of failure of kidney to form urine is called what? I think this is called anuria. Okay, let's find out the options. And yes, the answer is anuria. In RNA, thymine is replaced by what? Thymine is replaced by uracil. Simple. A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries as flower savar tomatoes, starling maize, BT soybean, a golden rice. Yes, that is right, golden rice, which contains a vast amount of vitamin A and which prevent from night blindness. Okay, and Escherichia coli is used extensively in biological research as it is easily cultured. Yes, that's it. Farmers have reported over 50% higher yield of rice by using which of the following biofertilizer? Mycorrhiza, Azolla pinnata, Cyanobacteria, Legume Rhizobium symbiosis. What? Okay, so the right answer will be Azolla pinnata. The part of life cycle of malarial parasite Plasmodium vivax that is passed in female anopheles, that is what? Sexual cycle pre-erythrocytic schizogony or exoerythrocytic schizogony or post-erythrocytic schizogony. Yes, so the right answer will be sexual cycle, because in sexual cycle occurs in malarial parasite, that is in Plasmodium vivax itself. Okay, the bacteria associated with plant genetic engineering are Salmonella and Pseudomonas syringae, Salmonella typhimurium and Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis and Pseudomonas fluorescens. Okay, so I think option B and C is correct. Yes, option D, that is Salmonella typhimurium and Agrobacterium tumefaciens with Bacillus thuringiensis and Pseudomonas fluorescens. Okay, B and C. Okay, let's move to the 144th number of question. Okay. So there is in plants insulin and pectins are dash. These are reserved food material. Okay. Middle piece of mammalian sperm possess mitochondria, centriole, mitochondria only, centriole only, nucleus and mitochondria. So look here, nucleus and mitochondria cannot be present in sperm, in the mammalian sperm. So in the, I think there will be present nucleus, but in it's not in the middle piece. Okay, so in the middle piece both mitochondria and centriole can be present. Photoreceptors of earthworm occurs in dash, that is photorespiration on the ventral side or lateral side, clitellum, many eyes or dorsal surface. Okay, so the right answer is dorsal surface, that is upper surface of the flat earthworm. Okay, most diverse macromolecule found in the cell both physically and chemically are dash. Okay, that macromolecule that is diverse and also found in cell both physical as well as chemically, so that is protein. Simple. The population of an insect species shows an explosive increase in numbers during rainy season, followed by its disappearance at the end of the season. What does this mean? What does this shows? This shows that its population growth curve is J shape, J type.
Okay, so which is employed for artificial ripening of the banana fruit? That is ethylene. Okay, no oxygen, no coumarin, no cytokine. Only ethylene is used for artificial ripening of the banana fruit. Homo sapiens evolved during dash. That is Pleistocene, not Oligocene, no Pliocene, no Miocene, only Pleistocene. In which of the following of the two names refer to one and the same thing? Tricarboxylic acid cycle, urea cycle, Krebs cycle, and Calvin cycle, or your tricarboxylic cycle and citric cycle. Yes, that's it. Which of the following is the reducing sugar? Yes, one number. Galactose is the right answer. That is simple. That is simple, brother. One number question. These are in plant cell peroxisms are associated with photorespiration. Simple. Which of the following plant species you would select for the production of bioethanol? Jatropha. Yes, that's it. Afferent nerve fiber carry impulse from effector organs to CNS or receptor organ to CNS. Okay, that's it. So it is the receptor to CNS. Bioaugmentation is the addition of commercially prepared bacterium strain. Yes. Glycogen is a polymer of dash. Galactose, fructose, sucrose, glucose. Yes. Glycogen is a polymer of glucose. If the mean and the median pertaining to a certain character of population are of the same value, the following is most likely to occur: normal distribution. Obviously, why bimodal distribution? Why T is only normal distribution? Choose the correct match. Bladder worm, sundew, Venus flytrap. These three, insect names are given. These are not insect. Trees name. Okay, plants name are given. So here, so let's see. Nepenthes diarrhea drosera, Nepenthes utricularia vanda, yes, utricularia drosera because these are the scientific names of bladder worm, that is utricularia, and here sundew that is drosera, and last of all Venus flytrap, it is diarrhea. Okay, the option C is correct. One of the following is the correct sequence to make a transgenic animal. This is micro injection, transfection, electroporation. Okay. So then protein synthesis in an animal cell takes place in cytoplasm as well as in mitochondria. That's it. Simple. Flowering dependent on a cold treatment is the not cryotherapy, cryoscopy, cryogenesis, or vernalization. Yes, that is the vernalization is the right answer. Transgenic plants are produced by using TI plasmid from the dash Agarobacterium tumefaciens. सिंपल नॉट ई कोलाई तो देखो भाई ई कोलाई इसमें यूज़ होता ही नहीं है ना कि बैक्टीरियोफेज यूज होता है ना कि एगरोबैक्टीरियम टूमेफाइलेंस यूज होता है ओनली एगरोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स vascular tissue and seeds is the bryophyte and removal of the apical board results in dash the removal of apical boards result in फॉर्मेशन ऑफ लैटरल ब्रांचिंग. हाँ, अगर एपिकल बोर्ड को निकाल दिया जाए तो इसमें लैटरल ब्रांचिंग फॉर्मेशन होता है. ठीक है. एंड हियर 166 इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैज 6 क्रोमोसोम देन इट्स एंडोस्पर्म विल हैव द डैश क्रोमोसोम. सिंपल. जो देखो पोलन ग्रेन में अगर 6 क्रोमोसोम होंगे तो एंडोस्पर्म में भी 6 क्रोमोसोम होंगे ना. अलग और ज़्यादा कम क्यों होंगे, सेम होगा ना. द फूड्स मेड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रिक्वायर टू पास ह्यूमन टेस्टिंग बिकॉज ऑफ they may cause allergies. Actually they may alter genes, maybe they may cause mutation and release toxins. Yes, the option C is very much true यार. So option D is all of the above. सब हो सकते हैं भाई. Aquatic reptiles are ureotelic. Simple. One number question. Aquatic reptiles are ureotelic. Function of iris is to alter the size of pupil. Yes. And the aquatic fern, which is an excellent biofertilizer, is Azolla, Pteridium, Marcellia, Salvine. Azolla is the right answer. Okay.
So in a standard ECG, electrocardiogram, which one of the following alphabet is the correct representation of the respective activity of the human heart? P. Depolarization of the atria. That represents depolarization of the atria represents to P. Total number of bones in the hind limb of a man is 21. You have to remember this. Okay, must remember. The worst environmental hazards were created by accidents in nuclear power plants and MIC gas tragedy, respectively in deaths. So the right answer is Ukraine in 1986 and भोपाल in 1984. ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी ये तो सबको याद होगा ना. Okay, meiosis 2 performs what? Separation of chromatid या separation of sex chromosome या synthesis of DNA and centromere. नहीं. आंसर होगा separation of chromatids. Okay, synthesis of which of the following is used to know the phylogeny? mRNA, tRNA, rRNA, DNA कौन सा होगा? देखो फाइलोजेनी इसको समझने के लिए RRNA ही यूज़ होता है. ठीक है, अच्छे से RRNA यूज़ होता है. ड्यूरिंग हुई स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम ADP एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. यार सिंपल पढ़ा होगा ना. डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन. दिस एविडेंस कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ डैश. एनाटोमी नहीं, एनाटोमी तो बिल्कुल नहीं. बायोजोग्राफी यस. एम्ब्रियोलॉजी कहाँ से आएगा यहाँ पर? नहीं होगा एम्ब्रियोलॉजी यार. पैलेंटोलॉजी नहीं. बायोजोग्राफी राइट आंसर है. ठीक है. मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज टैस बोथ कहाँ से आएगा? बैसिपिटल, सेंट्रीपिटल नहीं, एक्रोबिटल यस. ऑक्सीजन का मूवमेंट कहाँ से होता है? देखो आप पहले तो प्लांट का सबसे ऊपर भाग जो अपिकल पार्ट होता है ना, उससे एक्रोबिटल सक्सेशन वहाँ से होता है एंड बैसिपिटल सक्सेशन होता है. तो मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन कहाँ से होता है? बैसिपिटल एज वेल एज एक्रोबिटल. तो बोथ B and C इज द राइट आंसर. ए जीन पेयर hides the effect of another. The phenomenon is epistasis. एपिस्टासिस और म्यूटेशन कंफ्यूज होना है ना, तो मेरे हिसाब से तो एपिस्टासिस तुम चेक कर लेना. ठीक है. रेडियो एक्टिव थाइमिडिन व्हेन एडेड टू द मीडियम सराउंडिंग लिविंग मैमालियन cells gets incorporated into the newly synthesized DNA. Which of the following types of chromatin is expected to become radioactive? Cells are exposed radioactive. क्या है ये? यूक्रोमाटिन आंसर होगा. ठीक है, अच्छे से देख लेना ये क्वेश्चन को तुम. 181 को देखो. Which one of the following is the correct statement regarding the particular psychotropic drug specified? Okay, this is hashish causes the altered thought, perception and hallucination. Okay, that's it. hashish जो लिखा है ना, hashish causes the altered thought of perception and hallucination. That is the correct answer. Okay. Then flight muscle of bird are attached to what? Keel of the sternum. ए 1 mark क्वेश्चन पढ़ा होगा. कील ऑफ द स्टर्नम को अटैच होता है फ्लाइट मसल ऑफ द बर्ड. ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्स? दैट इज न्यूक्लियोफाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज. नहीं, गलत है. साइज डज नॉट इंक्रीज. यस. पायरिनोइड्स आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च. ओके, सिंपल. पायरिनोइड्स आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च. हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ द ह्यूमन बींग? लावेरन. रोनाल्ड रोज नहीं है भाई. मेंडल कहाँ से आ गया? स्टेफन भी नहीं, लावेरन. ओके. तो मॉडिफिकेशन बाय जर्म लाइन जीन थेरेपी आर हेरिटेबल as the functional gene is incorporated into their genome, somatic cell, all of the above or one of the. नहीं, their genome, उनका जीनोम ही आंसर होगा. इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूट्स इज़ द कैपिलरी वाटर. एकदम सही. इसमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है. ये कैपिलरी वाटर से होता है, ना कि ग्रेविटेशनल, ना कि केमिकली बाउंड वाटर. ओके. सो 188 नंबर क्वेश्चन. Suppression of reproduction of one type of organism by utilizing some features of its biology or physiology to destroy it or by use of another organism is known as the predation. ठीक है, इसको तुम याद रख लेना. डेफिनेशन बताया गया है ये सब. Which one of the following proved effective for biological control of nematodal disease in plants? That is Mycelium myceliensis. Okay.
क्या बेकार नाम है भाई ये. Which one belongs to the monorail? It is Ishirija. Simple. In the Taj Mahal is threatened to due to the effect of dash and sulfur dioxide. Simple. Study of fossil is the palynology. ये तो एक 1 मार्क क्वेश्चन है, उस पढ़ने नहीं है. अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन है कि ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलेरा इज गिवन सलाइन ड्रिप बिकॉज ऑफ डस्ट. उसके अंदर क्लोरीन. क्लोरीन इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. या कार्टाइन्स हेल्प टू रिटेन वाटर इन द बॉडी. यस, कार्टन बॉडी के अंदर उस समय वाटर का मतलब कमज़ोर हो जाता है ना, वाटर नहीं रहता बॉडी में, तो कार्टाइन्स दिया जाता है ज़्यादा. जैसे कि तो गोनाड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक वाट एक्टोडोर्म मेजोडोर्म. नहीं नहीं, हाँ हाँ, मेजोडोर्म होगा. गोनाड्स मेजोडोर्म से डेवलप होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व्स कैन रेगुलेट हार्ट बीट. एक्स क्रैनियल नर्व 10वां. ठीक है. रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट इन डैश इंटरब्रीडिंग विद इन हिज पॉपुलेशन. तुम अगर रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट करोगे ना तो पॉपुलेशन के अंदर ही इंटरब्रीडिंग हो जाएगा. ठीक है. ए डेल्टोइड रीज अकर्स इन ह्यूमेरस. वाओ. द contrasting pairs of factor in Mendelian crosses are called allelomorph. Golgi apparatus is absent in bacteria and blue-green algae. Simple. And in general, in the development history of a mammalian heart, it is observed that it passes through a two-chambered fish-like heart, three-chambered frog-like heart, finally to four-chambered stage. To which hypothesis can अच्छा कौन सा hypothesis? बायोजेनेटिक लॉ. हार्ड विनबर्ग लॉ कहाँ से आएगा? लामार्किज्म नहीं है इसमें. मेंडेलियन प्रिंसिपल तो कट जाएंगे, ऐसे बी और सी ऐसे कट जाएंगे. बाकी रह जाएगा हार्डी विनबर्ग लॉ, बायोजेनेटिक. हार्डी विनबर्ग कभी भी यहाँ पर आए नहीं थे इस टॉपिक पर. ठीक है. तो बायोजेनेटिक लॉ इज़ द राइट आंसर. सो देखो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. 68 क्वेश्चन 2020 का OUT पेपर का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. तो भाई साहब लाइक सब्सक्राइब कर देना यार. इतना रब बनाते हैं वीडियो यार, लाइक फाइक कुछ नहीं करते. ठीक है. तो थैंक यू यार.